वर्क में they are permanently given that. Yes, again I'm telling you, जो भी students अगर speech आप लोग लिखते हैं, please write down your own words. ठीक है, जितने simple words आप include करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, आप जितना अपना inclusion नहीं करेंगे, if you're not including your own words, तब आप ऐसे words use करते हैं जो आपको खुद नहीं समझ में आ रहे, जिनका meaning आपको खुद नहीं पता, which is very bad thing. क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑडियंस भी नहीं समझ पाएंगे. ठीक है. यस श्रेया, मुझे आपका जो ये स्पीच है उसमें रेक्टिफिकेशन यही करिए कि आपका जो भी वर्ड्स हैं वो आप अपने वर्ड्स में. ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आपने लिखा बहुत अच्छा है, बट वर्ड बहुत टफ यूज किए, इतना नहीं यूज करना. ठीक है. यस, अदर स्टूडेंट्स जिनको मैंने कहा था प्रैक्टिस करके आने के लिए. यस, नहीं सारा नहीं दिए हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू आपका बंडल मिक्स अप हो गया था. सो दो स्टूडेंट who I found the sheets, I have returned it. बाकी करेक्शन होते होते I will give you. ठीक है. यस, ऑल्सो इससे फॉरवर्ड आप जब भी कोई स्पीच लिखेंगे, अभी तो कंपटीशन के लिए चल रहा है इसलिए मैं कोई टॉपिक नहीं ले रही. इससे फॉरवर्ड आप जब भी कोई स्पीच लिखेंगे या फिर कंपटीशन के लिए भी जो स्पीच तैयार कर रहे हैं उसमें भी ये चीज बार बार मैं कह रही हूँ, ध्यान रखिए. अपने वर्ड्स आप जितने सिंपल वर्ड्स में इंक्लूड करेंगे उतना आपको वॉइस वेरिएशन करने में हेल्प रहेगी. ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स नहीं इंक्लूड करते हैं तभी जाकर आपके इमोशनल डिटैच हो जाते, क्योंकि वो वर्ड्स आपने नहीं लिखे हैं ना, आपने किसी और के वर्ड्स जो बोले गए हैं उसको कॉपी किया. इमोशंस कॉपी नहीं किए जा सकते, वर्ड्स कॉपी किए जाते हैं. तो वर्ड्स जब कॉपी करते हो, इमोशन आप कॉपी नहीं करते हो. बिकॉज ऑफ दैट आपका स्पीच मोनोटोनिक हो जाता है. ठीक है, जो कि पहले ही बता चुके हैं, इट इज नॉट अ गुड थिंग. तो इसीलिए आपको यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है स्पीच, ताकि आपका इमोशंस उसमें कहीं ना कहीं अटैच रहे. बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत रहे. ठीक है, तो जितना भी रहेगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए whenever you are presenting in front of the audience. समझ गए? यस, नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स का रह गया था प्रेजेंट करने के लिए. ओके, 2 स्टूडेंट, एनीबॉडी एल्स? पोस्ट कोविड वाला जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, since there are not many days left for the competition, so I'm not going to give you another topic for the speech. अभी उसी का प्रैक्टिस करिए जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, if you think that you are not well prepared enough for the competition, you can at least present in front of the class. ठीक है, आप क्लास में प्रेजेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हो ये देखने के लिए कि आप प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. ये जो चेंजेस अवेलेबल हैं या चेंजेस जो चाहिए आपकी स्पीच को बेहतर बनाने के लिए, वो कितने दिनों में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता. ठीक है, so do not just sit there and listen to others, also be participative. ठीक है, communication is not a thing that can be taught to you by some theories and practical visualization. You have to participate. You cannot be a passive participant in this class. ठीक है, चलिए. यस, who would come first? Aryabhata. Let him do and after that you do. आप एक ग्रुप में, अच्छा ग्रुप लिखा होगा. 6 को आपका कंपटीशन होगा, 6 of May. I'll let you know. ठीक है, इस स्पीच के बाद I'll let you know. पेपर या कॉपी लिख सकते हैं? नहीं बच्चे, कंपटीशन है, you are not allowed to take any paper and copy with you. But obviously, if you have participated, you will have to go. नहीं, सारे बैचेस को मिला. सारे बच्चों में से. Yes. See, your questions, you are asking the wrong questions. नहीं, मैं बता रही हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर ही ऐसे हैं जो आपको नर्वस कर देंगे. तो हम कहने का मतलब है इस तरह से मैं लिख के नहीं लेके जाऊंगा, नहीं उसका ग्राफ बना के लेके जाऊंगा. नहीं, कुछ भी नहीं, nothing. You have to be open in front of your audience. Yes, you have to be open in front of your audience. Your hand should be open in front of your audience. Your eyes should be continuously making eye contact with your audience. You have no reprise from that. Okay. It is not necessary.
We do have that, but will it be available for you or not? I'm not going to make sure. नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। Yes, listen carefully. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Respected faculties and dear friends, I would like to thank you, all of you, for the opportunity to be here today. My name is Ramu Kumar. I'm from Bihar. I'm a student of Bridge Course. My course is BBA. Now, I am sharing my view on post-COVID-19 socio-economic problem. COVID-19 is a deadly virus. This virus is spread easily one person to another. We are also known as novel coronavirus. Coronaviruses are large family of viruses that are common throughout the world. And can cause respiratory illness in people and animals. The pandemic has occurred in USA even after high technology advancement in healthcare infrastructure. The COVID-19 outbreak was first reported towards the end of 2019 in Wuhan, in Hubei province of China. At a later, it spread to other part of the world. It was declared as a pandemic by the WHO 11th March of 2019. Now, I'm going to share a real event who had occurred in my hometown during the outbreak of COVID-19 pandemic. My hometown is Umanath Bihar. In my hometown, most of the people are running their family through daily basis amid lockdown. They consumed all their savings, and after that, during the pandemic, that people go out of their home for fulfilling their needs of their family. They don't get any job because due to this pandemic. All economical, social, educational, religious service, transportation, export, import, transactions, and activities are completely ceased. We all know that due to outbreak of COVID-19 pandemic, how are the viruses affected our social life and health of our Indian economy? It means what are the impact of our GDP growth? Due to this pandemic, there are so many impact of our Indian economy and social life. The people self-quarantine during the lockdown. They decided to watch the alarmist news on TV, on social media. Due to these addictions, they lost their mental health. They felt stress, depression, frustration. Are lost their jobs, businesses, and our family members, which members has depend on whole family. That's why some people committed suicide. Economic crisis. Due to this pandemic, all economic activities are completely ceased. For example, travel, tourism, export and import, transportations, and even a stock market are crashed. Unemployment rates are increased due to all activities. According to International Monetary Fund, the global economy is shrink by over 3%, and Indian economy is shrink and reached minus 7.5% compared to the previous year during the pandemic.
At last, I would like to say that we all need to follow the golden rules. It means wearing face masks, maintain social distancing, and washing hands with soap and alcohol-based hand sanitizers. Stay safe, stay healthy, and stay positive. Thank you. Yes, any feedback from your side? Yeah, okay. Any other pronunciation? नहीं Yes, any other feedback that you can give me? नहीं. All right. Yes, pronunciation में दिक्कत है आपके थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन इसको एक दिन में नहीं अच्छा होगा, इसके लिए बहुत आपको कंटिन्यूअस रिलीजियसली मेहनत करनी पड़ेगी. Yes, no talking. आपको जब pronunciation आप कोई भी word, especially when you are writing a name, ठीक है, चाहे आप किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं, चाहे आप किसी सिटीज का नाम लिख रहे हैं, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आप फाइंड आउट करेंगे बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस. ठीक है, this is the outmost law that you cannot you can say being a speaker, this is an outmost responsibility for you to follow. ठीक है, आप यहाँ पर स्पीकर एज अ स्पीकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बिना सही प्रोनाउंसिएशन जाने इसका नहीं इस्तेमाल कर सकते अपने स्पीच में. ठीक है, सेकेंड थिंग, मोनोटोनिक नहीं लगने का कारण ये है क्योंकि इनका एक एक्सेंट है. ठीक है, है उसकी वजह से इनका एक एक्सेंट है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वेरिएशन है वॉइस में, लेकिन ये इमोशनल वेरिएशन नहीं है, ये एक्सेंचुअल वेरिएशन. ठीक है, जो एक्सेंट होता है उसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, ना कि इमोशन की वजह से. तो इमोशनल वेरिएशन आपको लाना है. ठीक है, जैसे पिछली क्लास में मैंने समझा था, अटेंड किया था पिछली क्लास, तो उस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ऑल्सो आई कॉन्टैक्ट आपका बहुत अच्छा था. ठीक है, बॉडी पोस्चर सही था. ठीक है, आपके शोल्डर क्रॉस नहीं किए, दैट इज वेरी गुड. थर्ड थिंग, आपने जो स्पीच का कंटेंट लिखा है वो भी सही. ठीक है, इन सब चीजों में आप सही हैं, आपको वर्क किस पे करना है पता चल गया. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है और आपका वॉइस वेरिएशन. ठीक है, वेरी यस. Yes, the rest of the students I can see, so there are 3 or 4 students who are actually बच्चे यहाँ क्लास में आपको कोई जरूरत नहीं कर रहा है. ठीक है, आप कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है. So if you have written even a one paragraph for this topic, you can go ahead and come up here and practice. ठीक है, you should be visible there. Good afternoon, respected ma'am and my dear friends. I am Swati Kumari. My course is PGDM. My topic is decoding post-COVID-19. The impact of COVID-19 is result in every sector around the world. It has affected educational system worldwide, leading to near to total closures of schools, universities, and colleges. While countries are at different points in their COVID-19 infection rates worldwide, there are more than 1.2 million children in the worldwide have been severely impacted by the temporary closure of the education. This is a crucial time for educational sector as the exams of different levels postponed and admission process got delayed. Teachers and students are good at it and they are not even ready for the sudden transitions from face-to-face learning to online learning. Only a handful of private schools and colleges
could adopt online teaching means. On the other hand, say low-income private schools have completely shut their activities. After the crisis over, things are not going to remain the same. Many people have lost their jobs, and institutions' priority will be put that their people into employment first. The social crisis created by the COVID-19 pandemic may also increase in equality discrimination and medium and long-term unemployment. The coronavirus pandemic also impacts export and import. The chronic contractions of this corona pandemic period is challenging for the whole world. India's growth in the fourth quartile of the fiscal year 2020 went down to 31% according to the Ministry of Statistics on May 31. The Indian government released the data for GDP that during the financial year 2020 to 21, GDP contracted by 7.3%. Now, conclusion, the overall economic system has deteriorated due to this pandemic, and it will greatly affect the social politics, education, and education. Thank you. Any feedback from the audience? I don't have any other? What do you mean by repetition? Okay, she was repeating words. So what is the problem in repeating words? Okay, lack of confidence can be issue. नहीं, बच्चे आपको मैं बताना भूल गई. Students have asked before her. Try to write your speech in perfect tense, either simple perfect, that is present perfect, or in past perfect. ठीक है, आपका speech जो है present tense में नहीं रहना चाहिए. It should be in perfect tense. ठीक है, present tense में सिर्फ तब रहेगा जब आप कोई natural fact, ठीक है, which is non-changing, उस fact को जब आप present करते हैं तब आपका tense present रहेगा. और कंटिन्यूस में तब रहेगा जब आप प्रेजेंट करते वक्त स्पीच को अगर कुछ बता रहे हैं, ठीक है, दैट दिस स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल डाटा हैज बीन कैलकुलेटेड और स्टिल गोइंग ऑन कैलकुलेटिंग व्हाइल वी टॉक. तो इस तरह का कंटिन्यूस टेंस रहेगा. जब आप स्पीच दे रहे हैं उस दौरान कुछ बात हो रही है तब आप कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे. ठीक है. सेकेंड थिंग, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका एक्सेंट आ रहा है टोन में. ठीक है, योर आई नो देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर सम पीपल टू चेंज, बट ये जो आपका एक्सेंट होता है इसको पूरी तरह चेंज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. एटलीस्ट ट्राई टू बी कम टू द मोनोटोन. ठीक है, हम अगर आपका जो नंबर है वो 0 पर है तो उसको ले जाने के लिए पहले 1 पर करेंगे, सीधा 10 पे नहीं जाएंगे, राइट. So we will come to the lower level first. पहले मोनोटोनिक करने का कोशिश करिए, एक टोन में लाने का कोशिश करिए without any negative variation that is not required. उसके बाद फिर आप ऐसे टोन्स डालिए, ऐसे मॉडिफिकेशन करिए जहां पर जरूरत है. टोन वेरिएशन करने का मतलब ये होता है कि जो चीज जरूरी है, जिसपे अटेंशन अट्रैक्ट करना है ऑडियंस का, वहां पर जोर डालिए. जहां पर नहीं, वो रनिंग में चलना चाहिए. ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, या वो सिंपल एक टोन में या लोअर टोन में रहेगा. ठीक है, जो गंभीर बातें हैं, जो स्ट्रेसफुल बातें हैं, जो सिवियर इम्पैक्ट सिवियर टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू टॉक, उसका टोन आपका नीचे रहना चाहिए. ठीक है, जो हैप्पी है, जो एक्साइटमेंट है, उसका टोन ऊंचा रहना चाहिए. ठीक है, इवन इफ यू आर सेइंग लाउडर,
There is a difference between loud and in the lower bass. ठीक है, आवाज को बेस पे रखना और लाउड रखने में डिफरेंस होता है. ठीक है, लोअर करने का मतलब ये है कि आवाज आपकी धीमी आनी चाहिए, भले आप तेज बोल रहे हैं. लेकिन ऊंचा करने का मतलब है कि पिच हाई होना चाहिए, चाहे आप एक्साइटमेंट में बात कर रहे हैं, चाहे आप हैप्पीनेस में बात कर रहे हैं. So this variation should come when you are talking about different things. ठीक है, sit down. Also, eye contact का जो issue है वो nervousness की वजह से होता है. When you are not maintaining the eye contact, you can't maintain the eye contact because your basic motive to come up here is presenting your views, not how to present your views. That is all right. उसके लिए थोड़ा time लगेगा, but keep on practicing. Anybody else who would like to come? Present it however you want. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I am Sonam Kumari, a BCA student of TechU, and I am here to deliver a speech on the topic post-COVID-19. As we know, friends, post-COVID-19 condition occurs in individuals with a history of probable or confirmed SARS-CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of COVID-19 with symptoms, and that lasts for at least 2 months and cannot be explained by an alternative diagnosis. So friends, how many of you have taken all doses of coronavirus vaccine? May you all have taken. Now I introduce you the term socioeconomic. Socioeconomic refers to society-related economic factors. These factors relate to and influence one another. For example, our employment will dictate our income. Our income level often correlates to our level of education, and our level of education helps to dictate our employment. So as we know, friends, that during post-COVID-19, many one hadn't got quality of education. That is why level of employment reduced and social economic problems had increased. Now I will aware you with my research point. As we know, friends, that social and economic factors such as income, education, and employment can significantly affect how well and how long we live. So during India's first stringent national lockdown between April and May 2020, individual income dropped by approximately 40%. Also, the pandemic caused further shocks to the system with a school forced to shut down during the lockdown period and the transition of students and teachers to online teaching learning. In India, around 250 million students are affected due to a school closure at the onset of lockdown induced by COVID-19. Now, the COVID-19 pandemic has had a detrimental effect on the labor market worldwide, causing many individuals to lose their jobs and business to close. The CMI also reported that the unemployment rate for the urban areas increased from 8.21% to 9.3% and from 6.4% to 7.28% for the rural areas. At lastly, I am requesting to you all, my dear friends, that from today we all will toil and labor more and more to make our social economic problems less. So friends, stay hygiene, use masks and sanitizers, be safe. Thank you to all my dear listeners. Yes, any feedbacks? Eye contact. Eye contact was already not practiced. Any others? Monotonic.
Sometimes laughing alone. Sometimes distracted. Any other feedback? See, being being here and presenting your speech, there is a difference between delivering a speech and other prospect of speaking. ठीक है? जब आपके पास टाइम रहता है to prepare, ठीक है? You prepare within those time so that you are able to come up here. ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये प्रिपरेशन का जो टाइम पीरियड है इसमें आप प्रिपेयर करके 100% परफॉर्मेंस देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल. 100% परफॉर्मेंस देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस, ठीक है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना, ठीक है, फिर उस पर वर्क करना, तब जाके आपका परफॉर्मेंस 100% या एटलीस्ट 90% अबव आता है. ठीक है, तो इफ यू आर कमिंग अप हियर एंड थिंकिंग दैट यू आर जस्ट गोइंग टू प्रेजेंट, तो वैसे जस्ट गोइंग प्रेजेंट नहीं करना चाहिए. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग बिफोर. अगर मैं कोई टॉपिक आपको दे रही हूँ, उसको अच्छे से एटलीस्ट एक ही पैराग्राफ लिखो, एक ही मिनट बोलो, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करके बोलो, क्योंकि आपका वर्बल में प्रॉब्लम नहीं आती है. वर्बल में क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी 2-4, वो तो आप करेक्शन करवा लोगे किसी से भी. ठीक है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. डिक्शनरी खोल के बैठ जाओ अच्छे से लिखने के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है. प्रॉब्लम आती है आपको प्रेजेंट करने में. तो जब आप प्रेजेंट ही नहीं करके प्रैक्टिस आ रहे हो, तो आप यहाँ आके कैसे एक्सपेक्ट करते थे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो. ठीक है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी और ऐसा काम भी नहीं करना. प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको यहाँ पर 15 बार करनी है. आप जब आते हैं यहाँ पर तो मिनिमम 15 बार अपनी स्पीच को रीड करके विद वॉइस वेरिएशन प्रैक्टिस करके तब आप यहाँ पर आएंगे. कुछ चीजें आप यहीं आकर समझते हैं, जैसे नर्वसनेस, वो हो सकता है कि आप अकेले घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना ज्यादा नर्वसनेस नहीं है, लेकिन यहाँ आके ज्यादा नर्वसनेस हो जाता है. वो चीजें यहीं आके आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप कहीं और नहीं कर सकते. बिकॉज द प्रेशर दैट यू फील, बच्चे बात नहीं करिए, द प्रेशर दैट यू फील स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, वो आप कहीं फील नहीं कर पाएंगे. ठीक है, इवन इफ यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेंबर और एनीवन, वो प्रेशर आपको सिर्फ ऑडियंस के ही सामने खड़े रहने से पता चलता है, एंड ये स्टेज का जो एरिया होता है वहीं आने से पता चलता है. So what you have to do is उन एस्पेक्ट्स को आप साइड कर दीजिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन चीजों पे ध्यान रखें. ठीक है, ऑलराइट, सिट डाउन. एनी अदर स्टूडेंट? एंड वन मोर थिंग, ये क्लासेस लाइव होती हैं, आपको पता है. विच कोर्स या विच वन से सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा. यस, अगर नहीं मिलता है and if you want to look at your performance to see, that's why I'm telling everyone you should be visible here, ताकि आप खुद जाकर देख सकें कि आपने कैसा परफॉर्म किया. ठीक है, क्योंकि इससे आपसे खुद से ज्यादा बेटर टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो आप खुद अपनी गलतियां देखिए कि आपने यहाँ आपके जैसे प्रेजेंट किया था, कैसे मैं उसको बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, उसके लिए आपको एवरी डे देखना है. जब भी आप यहाँ पर आके प्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स हो रही है, जो भी लाइव क्लासेस हो रही है, उनको जाके बैठ चेक करिए कि कैसे आज प्रेजेंट किया मैंने, कैसा बोला आज मैंने, वॉइस कैसा आ रहा है, आई कांटेक्ट कैसा लग रहा है, फेस एक्सप्रेशन कैसा लग रहा है. ये सब खुद से जज करना सीखिए. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस आपकी नॉन वर्बल आईने के सामने रह के खड़ी की जाती है, ताकि आप देख सके कि आपका कैसा नॉन वर्बल आ रहा है. ठीक है, Good morning to one and all present here, respected teachers and my dear friends. I am Shashanka, going to give you a short speech on the topic the coding of post-COVID-19 on social economic problems. We all know the virus was first identified in December 2019 in Wuhan, and after a month, in January 2020, the first COVID cases was reported in Kerala. Then after 2 months of first COVID case, government ordered a nationwide lockdown for 21 days. Shops during lockdown, shops were closed, restriction in movement,
lack of access to market. This all things were happen. Most of the family faces economic crisis. People lost their job due to lockdown because of COVID is likely to affect economical growth, increase in fiscal deficit and monetary burden, increase the risk of microeconomic instability, decrease migration and remittance, reduce income for travel and tourism. According to Hindustan Times, during second wave, 1 crore people lost their jobs and 97% of the household income declined since the beginning of COVID-19. Most of the abundant growth was happened in the tertiary sector due to digitalization, but the condition of primary and secondary sector the condition of primary and secondary sector affect badly because of lockdown. Due to this, people can't interact with each other. So industry was closed, many industry was not working. Agriculture also affected because shops were closed. Farmers not get fertilizers. Due to this, they get huge losses. In 2020, India lost more people to suicide than COVID-19 as per the latest report of NCRB. NCRB, which stands for National Crime Record Bureau. The country reported more than 1.53 lakh suicide, which is highly in the last 10 years. On the other hand, coronavirus infection killed 1.49 lakh people in 2020 as per the data from Union Health Ministry, while illness was the most attributed cause behind suicide. Daily wages worker made up the largest share of total suicide, shows NCRB data. Total 37,666 daily wages workers suicide because they will not give income due to restriction in movement. Product consumption rate is also decreases because the shops were closed, and also people don't want to buy all products because they want to only buy those products which is important for their needs. And we all know product consumption rate is the drive of GDP. This will all shown in our GDP also, and our GDP goes to our GDP gets a massive drop. It's shown in our GDP graphs also. It deviates to minus 24.4. Thank you. Yes, what are the feedbacks? Lay down on the podium. Own feedback. You lay down on the podium. Yes. Body language. It's quite slow. Yes, you're extending the lines more than regular time duration. Yes. First of all, voice were very much strong. Monotonic. It was like listening to Alexa. Second of all, you're too much nervous. Like your nervousness was shown from the face to your voice to be heard. Okay? And third thing, worry इतना ज़्यादा आपका लो था, as if you're going to fall down. ठीक है? पोडियम ने बचा लिया, otherwise you would have fallen down. तो मैंने बार-बार कहा है, especially those students who are tall, do not lean on the podium. That is only for the support, so that you could bind up your nervousness and not be shown to the audience. ठीक है? See, आपका जो shakiness होता है, quivering होता है या shivering होता है हाथ में या पैर में, वो सारी चीजें इतना जरूरी नहीं है कि बहुत पूरा ही छुपा देना है. ठीक है? कहीं ना कहीं से कोई एक कोने से कोई स्टूडेंट देख ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड नॉट बी एबल टू सी दैट. ठीक है? क्योंकि वो मैक्सिमम रेंज से एटलीस्ट आप कह सकते हैं 200 डिग्री तक वो कवर अप कर लेता है. तो ये चीज इसलिए नहीं है ताकि ऑडियंस ना देखे, इसलिए ताकि आपके मन में ये नेगेटिव थॉट ना आए कि कोई देख रहा है,
क्योंकि जो नर्वस होता है उसके दिमाग में अगर ये थॉट आ रहा है बार बार कि मेरा नर्वसनेस सामने वाले को दिख रहा है, तो वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु स्टार्ट स्वेटिंग, और उनको अगर आप हैंकी दे दोगे, इसका मतलब वो जान रहे हैं कि आपको पता है कि वो नर्वस, एंड दे गेट मोर नर्वस फ्रॉम दैट कि अरे सबको पता चल रहा है कि आई एम स्वेटिंग, देयर इज सो मच एम्बैरेसमेंट। तो वो चीजें आपके कंफर्ट के लिए बनाया गया है ये प्रोग्राम, ताकि आपको लगे कि हाँ बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, आई कैन बी कंफर्टेबल अराउंड दिस। दिस इज अ बैरियर फॉर यू टू just think that you have a thin wall between the audience and your as a speaker, you and your audience have a thin wall in between. ठीक है, तो ये आपके कंफर्ट के लिए ही है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाना वहां पर। ठीक है, do not अगेन एंड अगेन टाइम। और ये मैं चीज आप खुद नोटिस कर रहे होंगे, जितने लंबे लड़के हैं वही आके कर रहे हैं ये काम, जितनी शॉर्ट लड़कियां हैं या शॉर्ट लड़के हैं वो नहीं आके लीड कर रहे हैं। नहीं पहुंच पाते, इसीलिए तो उनके लिए वो सिर्फ कंफर्ट जोन रह जाता है। ठीक है, yes, do not lean on the podium. It very much looks like you are getting too much either comfortable or you're not you're enjoying your own speech too much. Okay, so this is not a good you can say impression to be created on the audience. Okay, you're here to inform. Again, monotonic, आपका जो statements थे वो इतने बढ़िया थे, अगर आपने उसमें वेरिएशन लाया होता तो बहुत सुंदर लगता सुनने। ठीक है, एवरेज टाइम कितना होना चाहिए, 3 मिनट या 3.5 मिनट? yes, 3 minutes is more than enough on average. 1.5 मिनट, 2 मिनट। See, the thing is, if you are giving a 3-minute speech, that means you are including each and every aspect, and at least you are explaining 4 to 5 points from the, you can say, proof, giving for your conclusion, also explaining the conclusion itself. ठीक है, तो जब आप बहुत बच्चे सुन लीजिए पहले, जब आप बहुत डिटेल में बताते हैं तो 3 मिनट काफी है। 3 मिनट से ज्यादा लंबा होना मतलब becomes like a lecture for the audience. ठीक है, 3 मिनट से कम है इसका मतलब आपने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, फॉर एग्जाम्पल 2 to 3 मिनट्स के बीच में अगर आपका स्पीच आ रहा है, दैट मीन्स बहुत प्रिसाइज तरीके से आपने 2 से 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर दिया है, दैट इज ऑलराइट। उससे भी कम आ रहा है, दैट मीन्स 1 to 2 में आ रहा है, दैट मीन्स यू डोंट हैव पॉइंट्स टू एक्सप्लेन और यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपर्ली योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए, और 3 या 3.5 तक रखिए, दैट इज एनफ। ठीक है, 4 या 5 मिनट्स हो जा रहा है, दैट मींस इट काइंड ऑफ बिकम लिटिल लॉन्गर। ठीक है, बिकॉज इफ यू आल्सो नोटिस 5 मिनट्स फ्रॉम अ वॉच, ठीक है, अगर आप देखते हैं 5 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स यू आर जस्ट वेटिंग विदाउट अ वॉच, within 2 minutes you will feel like 5 मिनट हो गए, right or not? So mentally your clock turns more faster than the actual clock, so try to keep it into concise manner, but at least present 2 to 3 points minimum and maximum 4 to 5 points to explain and present your point of view. Okay, anybody else? And next class को ही आपका ये competition होना है, so whoever is preparing for participation, please note down all the things that I have told you, all the suggestions that I have made. Possible है कि आप 80% पूरा अचीव नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए try to avoid those negative things from your mind. फिर भी भीड़ देख के थोड़ा सा पैनिक हो जाए। I tell you what, when you come up here, the first thought that comes into your mind is नहीं, negative thought comes into your mind first. You don't try to motivate yourself. ठीक है, आप खुद को मोटिवेट करने से पहले ही ये कह दे रहे हो कि जो है अच्छा है, जैसा है तैसा प्रेजेंट कर देता है, जैसे तैसे प्रेजेंट नहीं करना। अगर सब कुछ याद भी रहता है ना, तो ये डर रहता है कि अगला पॉइंट लाइन भूलना है। एग्जैक्टली, वहाँ पर इतना मतलब अच्छा से प्रिपेयर किए हुए हैं, वहाँ पर लोगों को देखने के बाद 9 पॉइंट्स में अगर बांटे हैं तो वहाँ पर 4 या 5 पॉइंट्स मेरे को याद रहता है कि इतने भाग में। That is natural. That is very much natural for you to feel nervous, especially if you don't have an actual practice. And frankly telling, I have been practicing since I was 5 years old.
So you can see the improvement that is does. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट कभी होगा नहीं, होगा लेकिन कंटिन्यूअस एंड विगरस प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस तब होगी जब आपको कोई ऐसा सर पे डंडा खड़ा हुआ मिला। ठीक है, इसीलिए ये प्रॉपर सब्जेक्ट डाला गया है कि ये पढ़ाना है, ताकि वो सर पे डंडा रहे और उसके डर में तुम लोग पढ़ो। ठीक है, Hello, my dear friends and listeners. My name is Rahul Kumar Sharma. Today, I'll be presenting my view on post-COVID-19 subject. Now, COVID-19 is an infectious disease caused by the Chinese virus SARS-CoV. The virus was first identified in Wuhan, China, in December 2019, and after that, quickly spread to the other parts of the world. That's why WHO declared a pandemic on March 2020. Almost 62 lakh people have died in the worldwide. Can you imagine? And it's a huge number. That time, almost every country was closing their borders was the first step. Most governments took to stop the spread of disease, followed by the complete lockdown, restricting the opening of businesses, industry, school, college, and many more. After that, unemployment, inflation, and poverty increased worldwide. People faced a lot of problems during the pandemic and after the pandemic. The pandemic has also affected educational and healthcare systems. During the pandemic, millions of people have lost their jobs. In 2020, as per the government data, 67% increasing report of suicidal behavior during the lockdown. India GDP contracted 23.9% in April-June quarter of 2020-21 financial year. Hence, we can say that COVID-19 was the biggest human disaster of the history. After every few years, pandemic comes. That's why we have to strengthen our healthcare system. That's all. Thank you. yes, any feedback from your side? Sound, what sound? वो दिक्कत है, वो normal Yes, बात। any other feedback from your side? Can I give mine? All right, first of all, आपने voice modulation की कोशिश की है and I appreciate that. ठीक है, he has tried to modify. जितने भी numbers थे आप ध्यान दीजिए, उन्होंने repeat किया है या फिर उससे जोड़ डालने की कोशिश की। ठीक है, millions of people have lost their life, उन्होंने जोड़ डालने की कोशिश की। Because of nervousness, वो उतना effort नहीं दिखाई दिया होगा आपको, but I appreciate that. ठीक है, second of all, nervousness है, पता चल रही है, but वो चीज आप यहाँ पर आके ही ठीक कर सकते। Other than that, आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, आई कांटेक्ट आपने कोशिश की मेंटेन करने की। ठीक है, वॉइस वेरिएशन आ रहा है, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट विल कम। ठीक है, आपने एफर्ट डाला, दैट इज वेरी गुड, बट थोड़ा सा पोस्चर की ध्यान रखिए। ठीक है, पोस्चर कैसा है, नर्वसनेस की वजह से वो पोस्चर भूल जाते हैं, तो वो पोस्चर पे भी ध्यान रखिए। वेरी गुड। यस, for those students who have this kind of problem कि यहाँ पर आके आप भूल जाते हैं, उसका क्या किया जाए। ठीक है, जो पॉइंट्स थे आप 9-7 पॉइंट्स को भूलकर वो 4-5 रह जाते हैं, उसके लिए माइंड मैप जरूरी है। माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप आपका किस तरह रहना चाहिए ये भी जरूरी है। हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द माइंड मैप। आपने पॉइंट्स मेंटेन किए, पॉइंट्स मेंटेन करने से माइंड नहीं होता है। ठीक है, आपका जो माइंड मैप होना चाहिए, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, लाइक अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक चीज मेंशन की है, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे आप एक कैसल इमेजिन कर लीजिए, कैसल मतलब पता है क्या होता है, किला। ठीक है, अगर आप एक कैसल इमेजिन करते हैं तो कितने विंग्स होंगे उसमें, उन विंग्स में कितने रूम्स होंगे,
कौन से रूम्स होंगे, कहाँ डिजाइन किया गया है, कितने डोर होंगे, कितने विंडो होंगे, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। लाइक लेट्स इमेजिन दैट वन पर्सन, आपको एक मेज पता है क्या होता है? भूल भुलैया, यस, एक्चुअल भूल भुलैया जो आपको एक प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, बुशेस के यूज करके बनाया जाता है। आपको एक मैप दिखा दिया गया और आपको बोला अंदर बीच में जाके सेंटर पे जाके रख दिया गया कि वहां से आपको खुद बाहर निकलना। वो माइंड मैप आपको क्लियर होगा तभी आप बाहर निकल पाओगे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट आउट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना होगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे मेंशन कर रहे हैं। फॉर दैट पॉइंट इंट्रोडक्शन किस तरह कर रहे हो आप, ठीक है, इंट्रोडक्शन किस तरह कर रहे हो, इंट्रोडक्शन से ट्रांजिशन कैसे हो रहा है डाटा एंड फैक्ट्स पे, ये ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। आप ट्रांजिशन पे ध्यान नहीं रखते, आप पॉइंट्स पे ध्यान रखते हो, तो वो पॉइंट्स आप भूल सकते हो, लेकिन ये ट्रांजिशन अगर याद रख लिया कि इंट्रोडक्शन से हम कैसे जा रहे हैं डाटा और फैक्ट्स में, तो ये ट्रांजिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये लिंक जो है ना, ये लिंक याद करना बहुत जरूरी है कि हमने कैसे इस डाटा को लिंक किया है तुरंत। ठीक है, जैसे आईटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपको हाइपरलिंक के बारे में पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक पेज को आपने कैसे दूसरे पेज से लिंक करना है बेसिकली, ठीक है। तो वो हाइपरलिंक आपके लिए कितना जरूरी है, एक बार बस क्लिक करते हो और दूसरा पेज ओपन हो जाता है, राइट, इट इज वेरी मच एफिशिएंट। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, लिंक करना, कैसे लिंक करें, राइट। दोनों पेज पे डाटा तो आपका गिवन है, आपने लिंक दिया है, लेकिन उसको लिंक कैसे करें, ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वहां पर। तो ये लिंकिंग थिंग जो है आपका, जो कि बॉडी ऑफ द स्पीच पे जाता है इंट्रोडक्शन के बाद, ये लिंक याद रखिए। बॉडी ऑफ द स्पीच में अगर आपने 2 से 3 पॉइंट लिखे हैं या फिर 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं, तो उन आपस में जो लिंक्स हैं एक एक पॉइंट का, फॉर एग्जाम्पल जॉब चली गई किसी की, ठीक है, जिस पर्सन की जॉब गई वो अकेला था, उस पूरे फैमिली में कमाने वाला, तो वो लोग जो डिपेंडेंट थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे आर बिकम हेल्पलेस। ये लिंक देख रहे हैं आप, एक से दूसरा जा रहा है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो फैमिली डिपेंडेंट थी, ठीक है, उनका इकोनॉमिकल क्राइसिस इंडिविजुअली हुआ, जिसकी वजह से कंट्री का क्राइसिस हुआ। ठीक है, लिंक डेवलप करिए हर एक डाटा पे, ठीक है, ऐसा नहीं रैंडमली कोई भी डाटा इंक्लूड कर रहे हैं, लिंक बनाना जरूरी है हर एक डाटा में, तब ज्यादा आप याद रहेगा। वो माइंड मैप जो आप प्रिपेयर करेंगे इस लिंक के थ्रू, वो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि आप डाटा फैक्ट्स भूल सकते हैं। ठीक है, 25 मिलियन लोगों ने अपना घर खोया, ये आप भूल जाएंगे, लेकिन लोगों ने घर खोया ये भूल सकते हो क्या? नहीं ना, वो डाटा जब इंक्लूड कर रखा है वो तो पता ही आपको, तो उस चीज को लिंक आपको डेवलप करना आना चाहिए। ठीक है, इफ यू नीड एनी मोर हेल्प यू कैन आस्क मी। ठीक है, अच्छा, I'll tell you that. Let me just end this link here today. And all the students who have opened, very good that you have participated. And आपके तरफ से अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो बहुत शाय हैं यहाँ, तो उनको मैं फेयर वार्निंग दे रही हूँ, आफ्टर दिस एंड्स उसके बाद एक एक इंडिविजुअल को अपना टॉपिक मिलेगा। That means 90 students, whether they are coming or not, doesn't matter. I will give 90 topics for all the students. 90